गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपण मैंने स्क्रीन रे जमते देखि पारथुबे आज आम क्लास 10th रो पॉलिटिकल फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग विषय में डिस्कस करने जाऊे। ये वीडियोटी आई होप कि 2025-26 रे जो विद्यार्थी माने बा जो स्टूडेंट्स माने CBSE एग्जाम फेस कर बहुत हेल्प करिवो। ता सहित जदि आपण कोनोसी स्टेट सिविल सर्विस किंबा UPSC प्रिपेयर करछन्ती किंबा अन्य कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करछन्ती एंड सेथि पई आपनको गोटे फाउंडेशन कोर्स दरकार बा आपन गोटे फाउंडेशन बिल्ड करिवार अछि रिगार्डिंग पॉलिटी, देन निहाती वीडियोटी आपनको बहुत हेल्प करिवो। सो आई होप कि आगो को आपण ए वीडियोटी एंजॉय करिवे, आपनकर बहुत हेल्पफुल हबो। सो लेट्स स्टार्ट। जमती कि मैं कहली व्हाट विल डिस्कस टुडे, दैट इज पावर शेयरिंग 10th class political first chapter. So before we start this chapter, let's start to understand what do you mean by power sharing. Power sharing माने कौन? Now simply as you can see, the distribution of power among different organs, level and social groups. The distribution of powers among different organs, levels and social groups is known as power sharing. As you know, ना गोटे डेमोक्रेसी डिफरेंट ऑर्गन्स थांती जेमती लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी एंड पावर ए डिफरेंट ऑर्गन्स भितर डिस्ट्रीब्यूट करने को ही पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को आसाए। ओके, सो दिस इज ए टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। अदर देन दैट ऑल्सो बहुत अदर टाइप्स भी पावर शेयरिंग अच्छी। एंड यू नो दैट जदि डेमोक्रेसी को आम कंपेयर करवा विथ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देन इन कंटेम्पररी वर्ल्ड डेमोक्रेसी को आम एथिपाई बेटर कहचे ना बिकॉज डेमोक्रेसी रे पावर कौन से सिंगल एजेंसी बा कौन से सिंगल इंस्टीट्यूशन बा कौन से सिंगल पर्सन को हाथ में कंसेंट्रेट न थाए। डेमोक्रेसी प्रिवेंट्स कंसेंट्रेशन ऑफ पावर and it distribute powers among different organs, levels and social group. So that is the idea of power sharing and I hope कि आप बुझी पार्थिबे what you mean by power sharing. Okay, so ए चैप्टर में पावर शेयरिंग विषय in details डिस्कस करिबा। बट बिफोर यू स्टार्ट दिस चैप्टर, ओके, चैप्टर टी आम स्टार्ट करबा पूर्व आई ऑलवेज रेकमेंड मु सबुले पिलांको रेकमेंड करिवि जे आम ओवरव्यू निहाती पढ़ा दरकार। ओके, बिकॉज गोटे लॉन्ग टर्म जदि आम ए चैप्टर टी को मन रखापी चाहूचे ताहले आमको निहाती गोटे माइंड मैप डेवलप करवा दरकार। ओके, सो चैप्टर माइंड मैप डेवलप हम जो आम ओवरव्यू को देखा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, so in a democracy, as you can see here, in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive, judiciary is very important, very important to the design of democracy. So question is why? Kahinki? Okay, democracy रे powers कौन से single organ हाथ में concentrate ही न थाए। okay, गोटे इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर ये निहाती आवश्यक टू डिजाइन द डेमोक्रेसी। व्हाई कहीं आवश्यक कारण कौन? एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन इज नॉट टू प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। पावर को गोटे इंस्टीट्यूशन बा गोटे एजेंसी बा गोटे व्यक्ति हाथ में कंसेंट्रेट न करी ताको आमे केते बेटर वे रे आमे डिसेंट्रलाइज करि परिबा। दैट इज द मेन एम ऑफ or the fundamental aim of democracy. So that's why we need power sharing arrangement, and other than that, to ensure participation, to sustain fairness and stability, and to respect the spirit of federalism also, we need power sharing. Okay, to ensure participation, as you know, legislature, executive, judiciary, different organs are there and different organs को different responsibility अच्छी। से माने जमती गवर्नमेंट प्रोसेस रे बेटर पार्टिसिपेट करि परिबे, आपको एनहांस करिबा, आपको एंश्योर करिबारे भी पावर शेयरिंग बहुत इंपोर्टेंट। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर ना, इन दिस चैप्टर थ्रू द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका
ओके बेल्जियम एंड श्रीलंकार एग्जांपल नहीं आमे टू स्टोरीज माध्यम रे बुझिया पे ट्राई करिबा हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग ओके गोटे डेमोक्रेसी रे पावर शेयरिंग रो डिमांड्स को भली कंट्रीज माने हैंडल करंती बाय इन सिंपल टर्म जदि मु कहिबी थ्रू दिस टू एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी आमे दुईटी स्टोरी माध्यम रे बुझिया पे ट्राई करिबा जे डेमोक्रेसी रे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट रो आवश्यकता कोन व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी okay this is the most important topic of this chapter and at last a chapter end ଆମେ डिस्कस करिबा ना various forms of power sharing okay तो चैप्टर को ब्रॉडली आमे टू कैटेगरी डिवाइड करि परिबा दीटा पार्ट रे आमे डिवाइड करि परिबा फर्स्ट पार्ट रे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका आमे बुझिया पे ट्राई करिबा जे नीड ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेकंड पार्ट रे आमे डिस्कस करिबा ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग सो आई होप आपण मानकर गोटे आइडिया डेभलप हो जाइथिबो जे आमे चैप्टर रे कोन डिस्कस करबा को चाहूचे माइंड मैप गोटे डेभलप हो जाइथिबो ओके सो लेट्स सी ओके गोटे छोट सजेसन आपण मानक जिते भी सोशल साइंस पढ़ुंट निज पाखे वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप एंड इंडिया भी पॉलिटिकल मैप निज पाखे रखु बिकॉज जिते हमको आवश्यकता पड़ा विल रेफर वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप एंड इंडियन मैप जहाँद्वारा कि आमको मैप आउ अधिक समय देवाक पड़ोनी ओके सो प्लीज कीप विथ योर सेल्फ वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप एंड इंडियन पॉलिटिकल मैप सो लेट्स सी लेट्स discuss about the story of case study of Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country belongs to Europe. Okay, Belgium Europe को belongs करे. Okay, so the area कहिबा then it is smaller than the state of Haryana. Haryana to be बहुत छोटो state टी. Okay, बहुत छोटो country टी and it has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. This is very important. You need to remember. Okay. And if you talk about its population, then half of the population of Haryana and little over 1 crore. Okay, Haryana population pakapaki half over. And the most important thing is the ethnic composition of this small country. Okay, the ethnic composition of this small country is very complex. Okay, so before we start with ethnic composition, let's try to understand what do you mean by ethnic. Okay, ethnic composition माने कौन. Okay, glossary आप लोगों ने देखी पढ़ती है. What do you mean by ethnic composition? Ethnic means a social division based on shared culture. A social division based on shared culture. Okay, you know कौन से भी सोसाइटी को जब आम देखा यू विल सी कि कौन से गोटे टाइप रो लोक से बसवास करती ना ओके वैरायटी ऑफ पीपल्स आर देयर जब आम इंडिया आम एग्जांपल नेबा जब आम इंडिया एग्जांपल नेबा देखिबो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप वैरायटी ऑफ पीपल्स आर देयर आम कहूचे बेंगली पीपल तेलुगु स्पीकिंग पीपल ओके ओडिया लोक आम ये कहूचे आम कहीपर हिंदू पीपल मुस्लिम पीपल क्रिश्चियन पीपल सिख पीपल रिलीजन बेसिस रे आम डिवाइड कर सो सोसाइटी रे डिविजन्स रुहे सोसाइटी भेराइटी ऑफ पीपल भेराइटी ऑफ कल्चर को बिलोंग्स करथुवा लोक माने रुहंती ओके दैट इज नोन एज एथनिक कंपोजिशन ओके ए सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर मीन्स लैंग्वेज से पारे बामर एथनिक सॉरी लैंग्वेज से पारे रिलीजन हे पारे अदर कौन सी भी डाइवर्सिटी ही पारे ओके सो generally people belongs to the same ethnic group they believe that now they belongs to the common descent generally गोटे ethnic group को belongs करथुवा लोक मानकर विश्वास थाए जे से माने common origin common background बा हमें simply बुझिया बोले गोटे common वंश को से माने belongs करंती so that is the ethnic composition okay and I hope अपन बुझी पारथिबे what do you mean by ethnic composition
So let's see the ethnic composition of Belgium. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and around 40% people live in the Wallonian region. Okay, country को हमें as you can see in the map रे देखि पारथुबे बा आपनका book रे देखि पारथुबे. Okay, two regions are there. Okay, two regions are there. Yellow shading जो region टी अछि, that is the this is the Flemish region and this is the Wallonian region. Okay, and if you talk about the Flemish region, okay, Flemish region, then 59% people are Dutch speaking. Okay, Flemish region रे पाखापाखि 59% people who चंते Dutch speaking, and Wallonian region रे around 40% people and they are 40% people and they are speaking French language. Okay, it means for a whole country रे, okay, Dutch माने हो चंदी majority, that is 59%, and French people हो चंदी minority, that is 40%, and around 1% people जो माने कि German भी कहते. Okay, but if you talk about this city, that is Brussels, this is the capital city of Belgium. जदि हमें Belgium कथा कहिबा, Belgium रो जदि ethnic composition कहिबा, then in Belgium 80% people, okay, 80% people they are speaking French and 20% people they are speaking Dutch. What it means? Okay, it हमें कौन बुझिले ना wait. Okay, it हमें कौन बुझिले ना in whole country, Dutch are majority, but in capital city Brussels, Dutch are minority. In whole country, that is French people, they are minority, but in capital city they are majority. So this is the ethnic composition of Belgium. Okay, what is the problem with this? It's कौन problem थिला Belgium रे. Okay, the main problem is the minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. Okay, what is the problem with Belgium? Okay, 1950s रे ही Belgium independence पाइथिला, and after independence देखा जाइथिला during the period of 1950s and 60 minority French speaking community. Okay, it is minority what use कराइछे from the total country perspective, whole country perspective रू कहा जाइछे. Minority French speaking community से माने generally rich and powerful थिले, but Dutch speaking community जो माने कि majority से माने economic development रो benefits and education रो benefits बहुत परवर्ती समय रे पाइथिले, and that led to the tension between Dutch speaking community and French speaking community. Okay, I hope you can understand. And if we talk about the city of Brussels, okay, Brussels situation आहुरी गंभीर थिला. कौन ना in Brussels presented a special problem, that is the Dutch speaking people constituted majority in the country but minority in the capital. Okay, first problem जे whole country रे Dutch speaking majority थिबा सत्वे भी समाने economic development and education रो benefits बहुत परे नहीं चंदे, and second ना capital city रे समाने होचंदे minority. That is the second problem. So that is the reason behind the tension of Belgium during the period of 90s, 50s and 60s. ये थिला Belgium विषय रे किछटा introduction. Okay, and now let us compare it with the situation of another country, and that is the Sri Lanka. Okay, as you know, Sri Lanka is an island nation. Okay, few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. Tamil Nadu coast ru किछि दूर रे आवश्यक किछि दूर रे अवस्थित. Okay, I want to ask you a question. Okay, there is a strait which separate India from Sri Lanka.
ओके श्रीलंका एंड इंडिया भितर गोटे स्टेट अच्छे जो स्टेट इंडिया श्रीलंका को इंडिया टू अलग करे ओके टेल मी दैट स्टेट नेम इन द कमेंट सेक्शन ओके so let's see it has about 2 crore people about same as in Haryana and like other nation of South Asian region okay आम कहि परिया श्रीलंका साउथ एशियन कंट्रीज को बिलोंग्स करे जदि पॉपुलेशन कहिबा पाखापाखि हरियाणा सहित सेम ओके एंड नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट ओके most important is ethnic composition. If we talk about the ethnic composition of Sri Lanka, as you can see 74% people are Sinhala and 18% people are Tamil speaker okay and again Tamils can be divided into two part पूरी तरह Tamils को हमें two part divide करि परिबा okay some Tamils they are natives to the country किछि Tamil जो माने कि श्रीलंका रो नेटिव पीपल आम कहीपर श्रीलंका को बिलोंग्स करती एंड सम Tamils whose forefather came from India as a plantation worker during the colonial period and they are called as Indian Tamils okay it means if you talk about the language composition of Sri Lanka जब हम language composition देखिबा then 74% होचंती Sinhala okay 18% होचंती that is Tamil okay and again 18% रो किछि Tamils होचंती श्रीलंका रो नेटिव Tamils से माने प्रकृत श्रीलंका रो एंड किछि जो मानकर फोर फादर्स कहा जाए जे विश्वास करा जाए जे से माने बहुत वर्ष पूर्व कॉलोनियल पीरियड रे ओके प्लांटेशन वर्कर्स भाबे प्लांटेशन फील्ड रे काम करिया पे इंडिया रो माइग्रेट हिचन एंड दे आर कॉल्ड एज इंडियन तमिल सो दिस इज द लैंग्वेज composition of Sri Lanka and if you talk about their religion then Sinhala people Sinhala speaking people generally Buddhist thile and if you talk about the Tamil से माने Hindus किंबा Muslims थिले and around 7% okay Christians and they both Tamil and Sinhalas okay जदि आमे Christian को कथा कहबा then Tamil भी किछि Christian थिले and किछि Sinhalas भी थिले okay so this is the ethnic composition of Sri Lanka okay जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे ethnic composition of Belgium okay मो CBSE स्टूडेंट्स मानक पई कहबी ओके जनरली ए टाइप रो क्वेश्चन केबे प्रीलिम रे आसे सिविल सर्विस रो प्रीलिम रे आसे नि जस्ट हमको ए चैप्टर रो की कांसेप्ट को हमको बुझिबार अछि ता छडा ए डाटा सब किछि भी यूपीएससी एग्जाम रे हमको हेल्पफुल होबनी बट CBSE स्टूडेंट्स मानक पॉइंट ऑफ व्यू रो कहबी ओके ए पार्ट रो 3 मार्क क्वेश्चन देटा ही पारे बट 2 मार्क क्वेश्चन ही पारे okay that is the ethnic composition of Belgium and ethnic composition of Sri Lanka jodi ethnic composition of Belgium question ase then you have to explain the language composition of Belgium jodi Sri Lanka ethnic composition ase then you have to explain both language composition and also with that is a religious composition okay so this is all about this story okay now just imagine okay गोटे मु क्वेश्चन पचरे पे चाहिबी ए बोथ स्टोरी रो कोन हे पारे जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन दिस सिचुएशन एवले सिचुएशन में कोन हे पारे ओके व्हाट कुड हैपन इन दिस सिचुएशन ना कहि परिबा ना मेजॉरिटी कैन सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर नंबर ओके बोथ केस रे बेल्जियम एंड श्रीलंका रे जो मानकर संख्या अधिका मेजॉरिटी जेमते हम कहि परिबा इन बेल्जियम डच स्पीकिंग पीपल एंड इन श्रीलंका सिंहला स्पीकिंग पीपल जेहेतु सेमानकर नंबर अधिका बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर नंबर सेमाने गवर्नमेंट ऊपर निजर अधिकार जाहिर करि पारंती सेमानकर डोमिनेंस को सिक्योर करि पारंती एवली ही पारे okay so as you can read here Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population and this leads to either hobo con obviously conflict hobo civil war hobo same in Sri Lanka the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country ye bhi pare but evole jati huए
जदि मेजोरिटी तांकर डोमिनेंस को सिक्योर करिया पई चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूमेरिक मेजोरिटी ताले हबो कोन दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो ताको हम नेक्स्ट वीडियो रे हम डिस्कस करिवा सो आज वीडियो रो मेन कंटेंट यह थिला सीबीएसई पिला मानक पई कहबी ए वीडियो रो कोन सब क्वेश्चंस आसी पारे ओके जनरली जमती पूर्व भी कही जे सीबीएसई व्हाट व्हेन हु ए टाइप रो क्वेश्चंस केबे भी पचारेनी ओके जनरली वर्तमान कॉम्पिटेंसी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसे सो एज यू कैन सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई वाज the Dutch speaking community in Belgium unhappy despite being in majority in the country? What will be the right answer? Why was the Dutch speaking community in Belgium unhappy despite being in majority in the country? Dutch speaking community Belgium रे majority हेबा सत्वे भी से कहीं unhappy थिले. What is the reason? The reason is they were minority in the capital and felt discriminated. ओके मैं पढ़िले दुटा रीजन से मानकर संख्या कैपिटल सिटी माइनॉरिटी थिला तापर से माने डिस्क्रिमिनेट फील करथिले काहे कि ना बिकॉज से माने इकोनॉमिक बेनिफिट बिकॉज से माने एजुकेशन रो जो बेनिफिट इंडिपेंडेंस पर एते उठै पार नथले एते नहीं पार नथले ओके दैट इज द रीजन ओके सो बी विल बी द राइट आंसर. So next question, what was the main cause of tension? What is the main cause of tension between Dutch and French speaking communities? Okay, Dutch and French speaking communities मानक भितर main issue कौन थिला ना that is cultural difference or because of religious practice or because of unequal economic development and power sharing or foreign interference, and as you can see right answer is option C. This question is very important. As you know CBSE रे निहाती assertion and reason based question 2 to 3 question आसे. Okay, as you can see here assertion statement first statement the French speaking community in Belgium was economically well off. Okay, the French speaking community in Belgium was economically well off. Reason this caused resentment among the Dutch speaking majority. नेक्स्ट तो बर्तमान देखो फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट की फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट की द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज इकोनॉमिकली वेल ऑफ यस करेक्ट फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी थिले बट दे वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एंड आको ए सिचुएशन को डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्ट करि पारि नथिले एंड दैट कॉज रिसेंटमेंट अमंग द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी यस बोथ assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A, so that's why answer will be option A. Last question, that is which of the following country does not share a border with Belgium? Okay, so a question टी बहुत easy अच्छी एक question टी मैं आपन मानो पचारे पे चाहिए right answer टी comment section रे दियंतो. Okay, so this is all about today's video. आई होप कि वीडियोटी आपको भल लगी एंड जदि वीडियोटी भल लगी जदि वीडियोटी आपको इनफॉर्मेटिव फील होती जदि आपको लगी जे वीडियोटी बाय वीडियो सीरीज माध्यम रे आगक आहरी बहुत वीडियो रिलीज करने जाऊँगी जदि आपको लगुच वीडियोटी तुमको फ्यूचर हेल्प करिवो ताले निहाती वीडियोटी को शेयर करंतु लाइक करंतु एंड चैनल टी भी सब्सक्राइब करंतु कंप्लीटली न्यू चैनल फास्ट वीडियो एटा मोर तथापि भी कहबी सब्सक्राइब करंतु सो दैट मते गोटे मोटिवेशन मिलिबो आहरी वीडियो करिवा पई बा मु बेटर करिया पई भी मते इच्छा हो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.